So, now we'll talk about the various diseases, their pathogens, how are they transmitted, their symptoms, and their preventions. First is dengue. We'll talk about dengue. Dengue, it is also called break-bone fever. It is caused due to strains of barbovirus. Okay, dengue is caused. Virus, how are they transmitted? Virus spreads by bite of female mosquito Aedes aegypti. Mosquito becomes infectious by sucking blood of the patient, and he becomes infectious 11 days after taking the blood meal. When the mosquito takes the blood meal of an infected person, it becomes infectious after 11 days. Now, what are the symptoms of dengue? High fever, high fever, severe muscle, dengue तो टाइप problem, joint pain होता है बहुत, and the patient virtually becomes immobile. Red colored rashes appear on the body on the 4th day to the 6th day, and blood platelet count also comes down as low as 20,000 हो जाता है. करो है. And bleeding from gums and nose से bleed करता है. How can you prevent it? First is control of mosquitoes. Destroy breeding grounds of mosquitoes. Use larvicidal and insecticidal sprays use करो, repellents use करो mosquito को free करने के लिए. And keep the body covered wearing full sleeve clothes पहन के रखो बोझो. And please don't take any antiviral drug if you have dengue. Okay. Next is एक और बीमारी चिकनगुनिया. Chikungunya, it is caused by alpha virus, which is also called chikungunya virus. How is it transmitted? Oyaki, by infected female mosquito of Aedes aegypti. एक ही type का. And there is another thing, albopictus, which also transmits the dengue virus. Mosquito bites during day में and in the lower limbs में अगर हुआ तभी चिकनगुनिया होता है. डे टाइम का मॉस्किटो से चिकनगुनिया होता है. Symptoms of chikungunya होचे after you get the mosquito bite, 4 to 8 days after that you get the fever. Abrupt onset of अचानक से high fever आ जाता है. Severe joint pain which may persist for several months तक होता है. And then there is muscle pain also. Headache, nausea, fatigue, rashes, ये सब तो है ही है. इसका भी कोई भी specific drug नहीं है. Antiviral, symptom based medicine होता है. Use of medicine for joint pain, for bringing down fever, यही सब है. And protection against mosquito bite देना पड़ेगा. And breeding grounds of mosquito को eliminate करो. Then we have another disease, AIDS. AIDS होचे acquired immunodeficiency syndrome. AIDS. It is caused by HIV virus or human immunodeficiency virus. It spreads through sexual contact से होता है with that HIV person. HIV contaminated syringe से भी हो सकता है किंतु blood transfusion से, needle से. ब्लड यदि अगर उनका ब्लड तुम पे आ जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर से चाइल्ड तक आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. What are the symptoms? Affects the immune system of the whole body. It leads to loss of natural defense. नष्ट हो जाता है. कोई भी बीमारी पकड़ लेंगे फिर. Your entire immune system is compromised. AIDS patients may develop swollen lymph nodes, low blood platelets होता है, severe weight loss हो जाता है, susceptibility to other जेकोनो other infection पकड़ लेंगे हम लोग. इसका भी कोई specific treatment आज तक आविष्कृत नहीं हुआ. So there is no specific treatment till date. Avoid unprotected sex. मत करो.
अवॉइड यूज ऑफ कॉमन रेजर्स, बार्बर्स शॉप में दूसरा का रेजर यूज मत करो. न्यू एंड स्टेरिलाइज नीडल्स एंड सिरिंजेस ही यूज होना चाहिए. एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. देन the last one is malaria, plasmodium. It is caused by, transmitted by female anopheles mosquito. मलेरिया में क्या होता है? चिल्ड शिवरिंग, हाई फीवर होता है एंड हेडेक भी होता है. फीवर सबसाइड्स विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग. देन कीपिंग मॉस्किटोज अवे बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करो. एंड टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स ले सकते हो लाइक क्लोरोक्विन.